السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت زید بن حارثہ کے واقعات میں بیان کر رہا تھا. Dans mon précédent sermon, j'étais en train de mentionner Zayd bin Haritha. طائف کے سفر کے واقعہ کا بھی ذکر ہوا. Et j'avais aussi évoqué le voyage du saint prophète Mohammed soit lui à Taïf. Et j'avais mentionné aussi le fait que Zayd avait accompagné le saint prophète soit lui lors de ce voyage. جو سیرت خاتم النبیین میں J'évoque ici d'autres explications présentées par Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin à propos de ce voyage à Taïf. Après être sorti de la vallée d'Abi Talib, le saint prophète Mohammed lui a entrepris son voyage à Taïf. Quand le boycott a été levé et que le saint prophète Mohammed lui a retrouvé un semblant de liberté dans ses mouvements, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a décidé de visiter Taïf et il a décidé d'inviter le peuple de Taïf vers l'islam. Taïf est un lieu célèbre situé à 40 milles au sud-est de la Mecque. Et Taïf, à l'époque, était habité par la tribu Banu Thaqif. Mis à part l'importance de la Mecque en raison de la présence de la Kaaba, Taïf était reconnu l'égal de la ville de la Mecque. De nombreuses personnalités éminentes et riches y résidaient. Les habitants de la Mecque eux-mêmes ont admis l'importance de Taïf comme le relate le Saint-Coran. Les habitants de la Mecque disaient « Laoula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayni azim » لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. C'est-à-dire, les mécréants disaient, si ce Coran était venu de la part de Dieu, pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un grand homme des deux villes, c'est-à-dire des villes de la Mecque et de Taïf? Par conséquent, au cours du mois de Shawwal, en l'an 10 de son prophétat, le saint prophète Mohammed lui entreprit tout seul un voyage à Taïf. Selon d'autres récits, Zayd bin Haritha l'avait accompagné lors de ce voyage. Le saint prophète Mohammed lui resta 10 jours à Taïf
et il rencontra successivement de nombreux chefs de la ville de Taïf. मगर उस शहर की किस्मत में भी मक्के की तरह उस वक्त इस्लाम लाना मुकद्दर Mais नहीं comme था। la Mecque, le destin de cette चुनांचे ville सबने n'était pas इनकार किया, d'accepter l'islam. Ainsi, tous ont refusé बल्कि हंसी उड़ाई d'accepter le message de और फिर l'islam. आप Certains सल्लल्लाहु अलैहि se sont वसल्लम ने moqués même du saint prophète ताइफ के Mohammed paix रईस soit आज़म lui. अब्द En fin यालील de compte, le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti और voir le plus grand हदीस chef में इब्न अब्द de Taïf यालील का नाम आता nommé है। Abdel Yalil उसके पास et il l'a जाकर invité vers l'islam. Selon इस्लाम divers hadiths, il se इस्लाम nommait की दावत aussi दी, Ibn Abdi मगर Yalil. उसने भी साफ इनकार किया, बल्कि तमस्सुल Mais के il a दिल में refusé कहा le message de l'islam, कि voire अगर आप सच्चे हैं sarcastiquement, il a dit au saint prophète Mohammed तो paix मुझे आपके soit साथ lui. गुफ्तगू की Si इजाज़त vous êtes véridique, eh bien, en ce और अगर cas, je ne झूठे suis हैं pas digne de vous parler. तो फिर गुफ्तगू Et का si आगाज़ vous êtes un करें इस menteur, हदीस का। alors il est और फिर इस inutile de ख्याल vous से parler. कि कहीं आपकी बातों का शहर के नौजवानों पर असर ना हो जाए, Puis, craignant que les jeunes आपसे de कहने la लगा ville ne soient influencés कि par le बेहतर saint होगा prophète कि Mohammed आप paix यहाँ से soit चले lui, जाएं, il a déclaré, क्योंकि il यहाँ vaut कोई mieux शख्स que आपकी vous बात सुनने partiez के लिए d'ici, तैयार नहीं। car il n'y a personne और उसके ici बाद qui उस soit बदबख्त ने disposé à vous écouter. शहर के आवारा आदमी Après cela, उसको cet खत्म कर infâme दिया। a lancé les हाँ हजरत vagabonds de la ville aux सल्लल्लाहु अलैहि trousses वसल्लम du saint शहर prophète से निकले Mohammed paix soit lui. तो ये लोग शोर करते हुए आगे पीछे हो लिए Quand और le saint आपने prophète paix बताने soit lui a लगे quitté la ville, les जैसे infâmes आपका l'ont सारा बदन poursuivi, lui खून से lançant des तरबतर हो pierres, et son और जो corps पहली tout रिवायत है entier उसमें ये भी था était कि हजरत ensanglanté. ज़ैद बिन हारिसा Selon le साहब premier récit, उनके सर पर भी Zayd पत्थर bin थे Haritha l'avait aussi तो उगते थे वो accompagné. पत्थरों Il से। avait aussi बहरहाल reçu des pierres à la tête बराबर 3 मील तक ये lorsqu'il लोग tentait de आपके साथ couvrir le साथ saint prophète, paix गालियां soit देते lui. और पत्थर बरसाते En चले tout आए। cas, ces vagabonds ont poursuivi le ताइफ saint से 3 मील के prophète फासले et पर son compagnon मक्के के pour रईस environ 5 kilomètres. उत्बा बिन Ils l'ont रबीआ का एक insulté et lui वाक़या। lancé des pierres. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint फरमाया prophète सल्लल्लाहु Mohammed paix soit lui s'est अलैहि वसल्लम réfugié सारी dans ce मुलाकात करके वापस verger et लौट ses गए। ennemis sont यहाँ एक retournés साय में खड़े épuisés. होकर आपने Sous फरमाया l'ombre कि d'un arbre, le saint ये prophète दुआ की Mohammed paix soit lui कि a prié en अल्लाहुम्मा ces इलैका termes. अशकु ज़ुअफ़ा Allahumma क़ुव्वती ilayka ashku व du'fi क़िल्लता wa हियलती quwwati व wa हवानी qilyata अलन नास hilati अल्लाहुम्मा या wa hawani ala अरहमर nas. राहिमीन Allahumma अंत ya रब्बुल arhamar मुस्तज़अफ़ीन rahimin, व anta अंत la रब्बी। rabbul mustad'afina ए मेरे रब, wa anta मैं rabbi. अपने ज़ोफ़ क़ुव्वत और क़िल्लत तदबीर Ô mon और Seigneur, je ज़ोर me plains मुकाबले में auprès de अपनी toi बेबसी de की mon शिकायत तेरे पास impuissance, de करता हूँ। mon incapacité et ए de मेरे ma खुदा, faiblesse devant le तू सबसे peuple. बढ़कर रहम करने वाला है Ô mon Seigneur, tu और es le plus कमज़ोरों और बेकसों का miséricordieux तू ही निगहबान और et tu es le मुहाफ़िज़ है। gardien et le तू ही protecteur des मेरा faibles et परवरदिगार des है। impuissants. मैं Tu es तेरे ही mon नूर की Seigneur. रोशनी में पनाह का खास्तकार Je होता हूँ, cherche refuge à la क्योंकि lumière de तू ton ही है visage. जो जुल्मतों को दूर C'est करता है toi qui dissipes और tous इंसान les को दुनिया और ténèbres आखिरत के et c'est toi सआदत qui का वारिस accordes les बनाता है। faveurs dans ce monde et dans l'au-delà à उत्बा और l'homme. शैबा उस वक्त अपने इस बाग में मौजूद थे। Utba et जब उन्होंने Shaiba आप étaient dans सल्लल्लाहु अलैहि leur वसल्लम को इस हाल verger. में देखा Quand ils ont vu le तो saint उन्होंने prophète भी Mohammed puis अपनी soit lui रिश्तेदारी dans से cet या état, ému कौमी एहसास peut-être से en raison de la relation या plus ou बहरहाल moins proche नामालूम avec le किसी saint वाक़यात prophète से puis soit lui, ou बड़े peut-être ईसाई par गुलाम solidarité tribale, दास नामी के ou यहाँ ले pour गए d'autres raisons, कि ils चलिए ont कुछ envoyé लोग un plateau de अल्लाह के राह raisins के पास au भेजते saint हैं। prophète Mohammed puis soit lui par वो ले l'entremise de गए leur esclave और chrétien अरदास से nommé मुखातब होकर Abdas. फरमाया Le saint कि prophète paix कहाँ गए soit हैं आप lui a pris les raisins et a demandé à और किस Abdas, मकसद से d'où viens-tu के पाबंद हो। et tu suis quelle उसने कहा कि मैं religion? नैनवा का हूँ Abdas a और répondu, मज़हब je viens de मज़हब ईसाई Ninive है। et आप je सल्लल्लाहु अलैहि suis वसल्लम un ने फरमाया chrétien. कि क्या वही Le saint नैनवा prophète Mohammed paix soit जहाँ lui a के सारे बंदे demandé, le même उसने कहा Ninive qui abritait le serviteur juste de वसल्लम। Dieu, Jonas, le fils de दास ने Mitai. कहा हाँ, मगर आपको Abdas a यूनुस। répondu oui. Mais फिर comment पूछा आपसे connais-tu Jonas? आपको यूनुस का हाल कैसे मालूम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le saint prophète मेरा भाई Mohammed paix था soit lui a वो भी répondu, अल्लाह il से était mon लगता था frère. और मैं Il भी était अल्लाह से aussi un लगता था। prophète d'Allah फिर et आपने je suis moi उस aussi un prophète इस्लाम d'Allah. की तबलीग Et फरमाई le saint prophète, paix soit और इस पर lui, असर lui a डाला prêché le message de और फिर आगे l'islam. बढ़कर जोश Et cela इखलास a में beaucoup touché आप सल्लल्लाहु अलैहि Abdas. वसल्लम के हाथ चूम लिए। Et dans sa passion, il इस a नज़ारे को embrassé दूर la से main खड़े du saint खड़े prophète उत्बा Mohammed, और paix शैबा soit भी देख lui. रहे थे। चुनांचे जब Utba et अब्बास ने Shaiba ont उनके vu पास cela वापस de किया loin. Et तो quand उन्होंने कहा Abdas est revenu अब्बास vers ये eux, क्या हुआ था ils lui ont demandé, कि उस शख्स que के हाथ t'est-il चूमने लगा arrivé? Pourquoi ये as-tu शख्स तो तेरे embrassé les दीन mains को de खराब cet कर homme? देगा Il va gâcher हालांकि ta तेरा foi, दीन उसके दीन से बेहतर alors है। que ta religion à toi est meilleure que la थोड़ी देर sienne. Le saint बाद prophète फिर आप Mohammed paix soit सल्लल्लाहु lui s'est ने इस reposé बाग dans में ce रात फरमाया verger pendant और quelque फिर वहाँ temps. से रवाना हुए Il a और ensuite नखले में quitté cet पहुंचे endroit जो मक्के से et il est parti à 1 किलो Nakhla, के फासले पर situé वाक़ à है। environ un jour de route
route de la वहाँ कुछ दिन Mecque. क़याम किया
et il est resté là-bas quelques jours. Après cela, le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à la montagne de Hira. Et puisque l'échec apparent de Taïf impliquait la possibilité que les Mécois seraient plus audacieux, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait savoir à Mut'im bin Adi qu'il voulait entrer à la Mecque et il lui a demandé si Mut'im pouvait l'aider à cet égard. Bien que Mut'im était un mécréant, il était noble de caractère. En pareil moment, il était contraire à la nature des Arabes nobles de refuser la protection à celui qui la demande. C'était là une des qualités des Arabes, même à l'époque de l'ignorance. C'est pour cette raison que Mut'im, accompagné de ses fils et armés, sont partis dans l'enceinte de la Kaaba et ils ont informé le saint prophète, paix soit sur lui, qu'il pouvait venir et qu'ils allaient assurer sa protection. Le saint prophète, paix soit sur lui, est entré à la Mecque, il a fait le tawaf de la Kaaba et accompagné de Mut'im et de ses enfants, il a été escorté à l'ombre de leurs épées et il est entré chez lui. Quand en cours de route, Abu Jahl a vu Mut'im dans cet état, il lui a demandé tout étonné: as-tu accordé à Mohammed ta protection ou es-tu devenu son disciple? Mut'im a répondu: je lui ai accordé ma protection et je ne suis pas son disciple. Abu Jahl a répondu: très bien alors, il n'y a pas de problème. En tout cas, bien que Mut'im est décédé dans un état de mécréance, il avait accompli cette action louable. Lorsque Zayd est arrivé à Médine après l'Hégire, selon certains, il a résidé chez Kulthum bin Hidam. Selon d'autres, il avait logé chez Sa'd bin Haysama. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre Usayd bin Huzayr et Zayd. D'aucuns écrivent que le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait lié fraternellement à Hamza. C'est-à-dire que Hamza était devenu son frère. C'est la raison pour laquelle, qu'au jour de la bataille d'Uhud, Hamza avait fait un testament en faveur de Zayd. En évoquant ce point dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci, que quelque temps après son arrivée à Médine, le saint prophète, paix soit sur lui, a renvoyé Zayd bin Haritha à la Mecque en lui remettant de l'argent. Et il est retourné quelques jours après à Médine en compagnie des membres de sa famille. Et il était accompagné aussi d'Abdullah bin Abi Bakr, qui avait emmené avec lui les membres de la famille d'Abu Bakr. Bara radhiyallahu anhu rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, exprima son intention d'accomplir la Umrah lors du mois Dhul Qa'dah, eh bien, les gens de la Mecque l'ont empêché d'entrer à la Mecque. Le saint prophète, paix soit sur lui, accepta la situation et a signé un acte de paix à condition d'être autorisé l'année prochaine d'accomplir l'Umrah et a résidé 3 jours à la Mecque. Lorsqu'il rédigeait le pacte de paix, il a stipulé: voici les conditions qui entourent ce pacte décidé par Mohammed, le prophète d'Allah. Les gens de la Mecque ont déclaré qu'ils n'acceptaient pas cela, et en ajoutant que si nous étions convaincus que vous êtes le prophète de Dieu, nous ne vous aurions pas empêché d'entrer à la Mecque. Pour nous, vous êtes tout simplement Mohammed bin Abdullah. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: je suis aussi le prophète d'Allah, ainsi que Mohammed bin Abdullah. Et il a ordonné à Ali de supprimer la mention prophète d'Allah du pacte. Ali a répondu: certainement pas, je jure au nom d'Allah que je n'effacerai jamais la mention de votre statut. C'est un statut qu'Allah vous a accordé, je ne pourrai pas l'effacer. Le saint prophète a pris donc la feuille de ses mains. Il ne savait pas écrire très bien, mais il a écrit ceci: voici les conditions qui ont été établies par Mohammed bin Abdullah. Nous n'apporterons aucune arme à la Mecque excepté des épées qui seront dans leurs étuis, et nous n'emmènerons aucun Mécois avec nous, mis à part si quelqu'un souhaite venir de son propre gré.
et nous n'empêcherons aucun de nos compagnons de rester ici s'il le souhaite. बहरहाल इस मुआहदे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा En साल accord avec मक्के में cet दाखिल acte, हुए l'année d'après, le saint prophète, paix soit sur lui, est entré à la Mecque. तो कुरैश ने Et au terme des 3 jours, les Korachites कुरैश हज़रत अली के sont पास venus आए voir Ali और कहने et लगे ils lui ont dit: कि Dis आप à ton compagnon, c'est-à-dire au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de हज़रत partir से कहो d'ici. कि Le यहाँ से délai de चले 3 jours vient de s'écouler. क्योंकि मुकर्ररा वक्त मुद्दत गुज़र चुकी है 3 दिन Selon की la शर्त condition, खैर il लेकिन pouvait 3 दिन rester हो 3 गए jours et cette période चनाचे vient नबी de करीम सल्लल्लाहु अलैहि s'écouler. वसल्लम वहाँ Le से saint रवाना prophète होकर Mohammed, paix soit sur lui, a donc हज़रत quitté हमज़ा la की Mecque. बेटी उमारा La fille de एक Hamza, रिवायत में Ammara, अमामा l'a suivie. और दूसरी Selon रिवायत d'autres में traditions, अब्दुल्ला elle की s'appelait मिलता है Amama ou Amdullah. आपके पीछे पीछे आई आप सल्लल्लाहु अलैहि Elle वसल्लम के a suivi le saint ए prophète en चाचा disant: Ô oncle, ô oncle. हज़रत अली ने Ali जाकर a उसे attrapé sa लेकर main पकड़ लिया et a dit à Fatima: उसका हाथ पकड़ा Gardez la fille de और हज़रत notre फातिमा oncle avec vous. अलैहिस्सलाम से कहा कि Fatima a आप donc चाचा की बेटी pris को ले लो cette fille उन्होंने उसको सवार कर लिया et par la अब suite, हज़रत अली Ali, हज़रत Zaid ज़ैद et और Ja'far हज़रत ont जाफ़र commencé à se disputer au हज़रत हमज़ा की sujet लड़की de की la तरफ उठ रहने fille लगे de Hamza. हज़रत अली कहने लगे कि मैंने तो Ali इसको a लिया है और मेरे déclaré: चचा की बेटी है Je l'ai prise et और elle हज़रत est la जाफ़र fille de ने mon कहा oncle. कि Ja'far a मेरे चचा की déclaré: बेटी है Il s'agit de la fille और de इसकी mon खाला oncle et sa अस्मा tante बिन्त उमैस maternelle, मेरी बीवी है Asma bint Umays, और est ma हज़रत ज़ैद femme. ने कहा कि मेरे भाई की Zayd, बेटी quant à lui, a déclaré, conformément au lien de ख़ातुन निसाई fraternité établi par le saint prophète, फिर il नबी s'agit सल्लल्लाहु de अलैहि la वसल्लम fille ने de mon frère. इसके मुतालिक फैसला किया Le saint prophète, paix soit sur कि वो lui, अपनी a खाला के statué पास रहें sur cette affaire et a ordonné qu'elle reste avec sa tante maternelle, c'est-à-dire auprès de Ja'far. जो थे हज़रत जाफ़र यानी उनके पास रहे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Ensuite, कि le मेरी saint खाला को prophète, paix soit मंज़िल sur अम्मा की lui, है a ajouté: और La हज़रत tante अली से कहा maternelle अब मेरे ressemble को à la mère. Et il a उनका dit à गुस्तार Ali: हूँ और Tu हज़रत जाफ़र से m'appartiens कहा et je कि t'appartiens. सूरत और सीरत Et में il मुझसे s'est मिलते adressé à जुलते हो Ja'far. Il a déclaré और que हज़रत tu ज़ैद से ressembles कहा physiquement à कि तुम moi, हमारे भाई हो ainsi que sur le मेरे plan de दोस्त la हो personnalité. Il a dit à हज़रत Zayd: अली Tu es ने mon कहा frère et mon कि आप ami. हमज़ा की बेटी से शादी नहीं कर लेते Ali आप lui a सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया proposé de se marier कि avec वो la fille मेरे de रज़ाई Hamza. भाई Le की saint बेटी है prophète a déclaré: मैं C'est la fille de mon भाइयों में frère de और lait मैं इस बच्ची का चचा हूँ et je suis ये l'oncle रिवायत paternel de cette fille. बुखारी में है Cette और tradition a été सीरतुल नबविय्या mentionnée में भी है dans Bukhari ainsi que dans la Sirat al-Halbiya. हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने हज़रत उम्मे ऐमन की Zayd bin शादी की Haritha avait épousé हज़रत उम्मे ऐमन Ayman. का नाम बरका था Ayman qui se nommait और aussi आप अपने Baraka. बेटे ऐमन की वजह से उम्मे ऐमन Elle était के नाम से célèbre मशहूर थी sous le nom और हबशा Ayman की रहने grâce à वाली son थी fils. नबी Elle करीम सल्लल्लाहु résidait अलैहि वसल्लम के वालिद auparavant en Abyssinie. हज़रत अब्दुल्ला की Elle कुंवारी थी était l'esclave d'Abdullah, उनकी वफ़ात के le बाद père du हज़रत saint उसामा के पास prophète रहने Mohammed लगी lui. जब Et रसूल suite au करीम décès de सल्लल्लाहु ce अलैहि वसल्लम की उम्र dernier, 6 साल की elle est हुई restée avec Amina, तो la अब्दुल्ला का mère du माजरा saint हिसाब prophète. देकर Lorsque le saint मदीने से prophète avait जब 6 वे ans, मदीने गईं sa mère l'a तो उस emmené वक्त à हज़रत उम्मे ऐमन Médine pour मुतालिका rencontrer sa था famille. Et Ayman les accompagnait comme domestiques. मदीना से वापसी पर जब अबवा En effet, elle गांव devait जो être toute jeune à मदीने से l'époque. 5 मील के फासले पर है Lors du chemin पहुंचे retour, तो lorsqu'ils वहाँ sont पर arrivés à Abwa, qui se trouve हज़रत environ उम्मे 8 ऐमन kilomètres de la हज़रत mosquée सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Naboui, को Amina, la दी mère कि du वो saint मक्के prophète, paix वापस soit आएं sur lui, est फिर décédée. मक्के से Et गई Ayman a emmené le saint prophète वहाँ हज़रत sur सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम les के 2 mêmes दारे नबुव्वत chameaux से avec क़बल lesquels ils avaient quitté la मक्के Mecque. में हज़रत उम्मे Avant ऐमन que le की saint शादी prophète ne se soit उबैद बिन ज़ैद annoncé से हुई prophète à la जो Mecque, खुद एक बख्शी गुलाम Ayman थे s'était marié à Ubayd उनके bin यहाँ बेटा Zayd, पैदा qui était हुआ lui-même un जिसका नाम esclave ऐमन था d'Abyssinie. Ils ont eu un हज़रत fils ऐमन ने qu'ils ग़ज़वा ont हुनैन nommé में शहादत Ayman. का मुकाम हासिल किया Ayman est tombé à martyr जब lors de उम्मे la ऐमन के bataille de खाविंद की Hunayn. वफ़ात हो गई तो आपकी Lorsque le शादी mari Ayman est हज़रत ज़ैद décédé, से करवा elle a दी été mariée à एक Zayd. रिवायत में यह है कि हज़रत उम्मे Selon un ऐमन récit, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Ayman traitait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec une grande bienveillance. वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत मेहरबानी से पेश आई Ayman s'occupait और du आपका saint ख्याल prophète रखती Mohammed थी paix soit sur lui avec une grande इस पर bienveillance et रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु s'occupait अलैहि de वसल्लम ने lui. फरमाया Après le जिस décès de वक्त son अपनी mari, le ऐमन saint की prophète a खातून से déclaré: शादी Celui करके qui souhaite खुश être होना heureux चाहता en है épousant une femme तो du उसे paradis, eh चाहिए bien qu'il कि वो épouse ऐमन से शादी Ayman. कर ले चुनांचे इस पर हज़रत ज़ैद Sur ce, बिन Zayd हारिसा bin ने Haritha इनसे a शादी की épousé Ayman जिससे et हज़रत Oussama उसामा bin पैदा Zayd हुए est né de cette union. हज़रत
हज़रत उम्मे ऐमन ने मुसलमानों के हमरा Ayman avait émigré की थी। en Abyssinie वहाँ avec से les हजरत musulmans के et par बाद la suite elle est revenue à मदीने वापस Médine आई et elle avait और participé à la गज़वा bataille शिरकत की। d'Uhud. इस Lors de la मौके पर आप bataille लोगों को d'Uhud, elle खैबर offrait à boire aux और जद्दों की soldats तीमारदारी et करते थे। elle soignait les गज़वा blessés. खैबर में भी शिरकत की तौफीक मिली इनको। Elle avait aussi participé à la bataille de 23 हिजरी Khaybar. में जब हज़रत उमर ने शहादत पाई En l'an 23 de l'Hégire, lorsque तो Omar उन्होंने बहुत radiallahu बड़ा anhu, est tombé à बहुत कमज़ोर थी। martyr, Ayman avait beaucoup उन्होंने जवाब pleuré. दिया Et कि on हज़रत lui a अली की demandé la शहादत से cause et elle a répondu: इस्लाम कमज़ोर पड़ गया। l'islam se retrouve affaibli हज़रत उम्मे après ऐमन के le बाद martyr d'Omar. उस्मान के बाद Ayman est दौर décédé au खिलाफत के début आगाज़ de la हुआ। période du califat d'Ousmane radiallahu anhu. हज़रत ज़ैद की हज़रत उम्मे ऐमन से शादी के मुतालिक Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a हवालों से évoqué लतीफ़ साहब longuement तारीख le की है कि mariage de ये Zayd avec Ayman en se दरअसल basant sur différentes जवानी références. रात में Voici un résumé कि de उम्मे ses ऐमन écrits à वही ce हैं propos. जो आपके वालिद की Ayman वालिद était एक जवानी की une हैसियत में esclave que आप le saint सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prophète के मुझसे avait reçu en héritage suite au बड़े décès होकर de son आपने père. Par la मुलाकात suite, कर ayant ली atteint l'âge adulte, le saint और उनके prophète, paix साथ soit sur बहुत lui, एहसान a और सलूक affranchi फरमा रहे। Ayman et l'a बाद में traité उम्मे avec une ऐमन की grande शादी bienveillance. आपके आज़ाद करदा Par la गुलाम suite, Ayman ज़ैद बिन s'est हारिसा marié के साथ avec हुई Zayd bin Haritha, और l'esclave affranchi उनके du saint बदन से prophète Mohammed, paix soit sur उसामा lui. बिन ज़ैद पैदा हुए जिन्हें Oussama bin Zayd est né de cette union हिब यानी et il मोहब्बत और प्यार portait भी le कहते nom हैं। de Al-Hib ibn al-Hib, c'est-à-dire le fils bien-aimé du bien-aimé. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le हज़रत saint उम्मे ऐमन को prophète देखकर Mohammed, paix फरमाया soit करते sur थे lui, avait pour कि या coutume de उम्मा dire à ए मेरी Ayman, माता। ô ma mère. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन की तरफ Et en देखकर regardant फरमाते dans sa direction, le saint prophète, paix soit sur lui, हाज़ी disait: बक़ियत अहले बैती, elle ये est मेरे la अहले बैत membre की बाकी restante de माता ma है। famille. एक दूसरी Selon un रिवायत autre में आता récit, था le saint prophète Mohammed, वहाँ paix soit हज़रत sur lui, सल्लल्लाहु अलैहि aurait वसल्लम यही फरमाते déclaré: थे Ayman उम्मा ऐमन est ma mère मेरी वालिदा après हुई, ma mère यानी उम्मे ऐमन biologique. मेरी हकीकी वालिदा के बाद मेरी वालिदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी Le saint prophète उनकी मोहब्बत Mohammed, paix soit sur तशरीफ ले lui, जाया करते थे। partait la visiter à la maison. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से Anas bin रवायत Malik है relate que कि lorsque जब les मुहाजिर émigrants मक्के ont से मदीना quitté आए la Mecque pour se तो rendre à उनके हाथ में कुछ Médine, भी न था ils étaient और sans le sou. अंसार ज़मीन और Les जायदाद वाले Ansar, थे। quant à eux, possédaient des तो terres et अंसार des ने biens, et ils avaient promis aux émigrants उनसे de la मुआहदा किया Mecque कि वो de इनको leur अपने offrir बागों une और मेवों part में des अरसल दिया fruits de करेंगे, leur verger tous लेकिन उनमें les से ans. काम काज वो खुद करेंगे Les और आपको émigrants फल n'avaient देंगे, pas अनाज travaillé देंगे, dans les vergers, et लेकिन les उनको Ansar हक में जो eux-mêmes मजदूरी है allaient s'occuper वो संभालना है, des वो किया vergers. करेंगे, मुहाजिरीन को नहीं करने देंगे। हज़रत अनस की Sulaim, वालदा la mère d'Anas, हज़रत उम्मे qui était सुलैम aussi la mère d'Abdullah यानी bin जो Abi हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी Talha, तलहा की भी eh वालदा bien la थी, mère d'Anas avait तो हज़रत offert au अनस saint की माँ prophète ने Mohammed, paix soit हज़ूर sur सल्लल्लाहु अलैहि lui, वसल्लम को quelques dattiers. कुछ खजूर के दरख्त Le दिए saint थे। prophète Mohammed, paix soit sur lui, नबी par la करीम सल्लल्लाहु suite अलैहि a वसल्लम ने offert ces ये दरख्त dattiers अपनी खिलाई à Ayman, sa हज़रत उम्मे ऐमन nourrice. को दे दिए। Ayman, हज़रत qui उसामा était बिन aussi ज़ैद la की mère वालदा थी। d'Oussama bin Saïd. इब्न शहाब कहते थे कि मुझे हज़रत Ibn अनस बिन मालिक Shihab ने बताया relate que कि नबी Anas करीम bin सल्लल्लाहु अलैहि Malik वसल्लम avait raconté que जब lorsque बैत le saint तबूक के prophète, paix 22 soit फारग sur हुए lui, est retourné de la और bataille de मदीने में लौट Khaybar, गए les तो émigrants मुहाजिरीन ont ने अंसार retourné के aux ऊपर भी ज़ुल्म Ansar कर les दिए, dons qu'ils avaient यानी reçus फलदार de leur दरख्त कि part, उन्होंने उनको अपने बागों से दिए, c'est-à-dire les arbres fruitiers de leur उनको verger. कुछ अपना भी कुछ दौलत जायदाद वगैरह मिल गई थी। नबी Les करीम सल्लल्लाहु अलैहि émigrants वसल्लम ने ont भी हज़रत retourné अनस की donc वालदा को उनकी ces arbres बीवियाँ वापस कर fruitiers दी aux Ansar, और et le फिर saint रसूलुल्लाह prophète, paix सल्लल्लाहु अलैहि soit वसल्लम ने sur lui, उम्मे a ऐमन aussi को retourné à la mère अपने d'Anas बाग से कुछ certains de ses दरख्त देते थे। dattiers qu'elle lui avait offerts. Et बुखारी le की saint एक दूसरी prophète, paix रिवायत soit में sur lui, यानी avait तफसीलात नहीं offert हैं certains कि dattiers हज़रत अनस से à रिवायत है कि Ayman de कोई son सहाबी propre verger. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Le लिए recueil de कुछ Bukhari évoque खास d'autres कर दिया détails à ce करता था। propos. Anas relate qu'un जब compagnon आप avait सल्लल्लाहु अलैहि réservé वसल्लम ने quelques dattiers au saint prophète, paix soit कुरैज़ा sur और lui. नज़ीर फतह किए Mais le saint तो prophète आपको n'avait खजूर plus खिलाई besoin de ces dattiers lorsqu'il a eu la victoire sur les tribus Qurayza et Nadir. तो कहते हैं Les membres de कि la मेरे famille घर वालों d'Anas ने ont मुझे demandé कहा à Anas de se rendre auprès du saint prophète, paix soit sur कि मैं lui, नबी करीम et सल्लल्लाहु de अलैहि lui वसल्लम से आऊं demander de retourner और certains आप des सल्लल्लाहु arbres अलैहि qu'on वसल्लम lui से avait वो offerts, दरख्त जो उन्होंने étant अमान donné हज़रत से qu'il किए n'en थे avait plus besoin. या उनमें से कुछ दरख्त वापस करने के लिए कहूँ क्योंकि अब आपको ज़रूरत नहीं रही। अनस से ये रवायत है। तो कहते हैं
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से Anas relate ceci. क्योंकि हज़रत उम्मे ऐमन को दिए हुए थे Étant donné que le saint ये समझ prophète, कर paix हज़रत soit उम्मे soit lui, ऐमन avait आई offert ses dattiers और à मेरी Umm गर्दन पर Ayman, डाला और बोली lorsque cette नारियत dernière a entendu à propos de कसम है cette उस रात nouvelle, की elle est venue me उसके voir, m'a सिवा कोई attrapé मबूद par नहीं le col कि et ये m'a लफ्ज़ dit: तुम्हें कभी नहीं Je ne मिलेंगे vais pas te जबकि क़यामत retourner सल्लल्लाहु ces अलैहि वसल्लम dattiers. मुझे दे Je चुके हैं jure par Dieu, celui qui est जब digne कुछ ऐसा ही d'adoration, कहा étant donné que le saint नबी prophète सल्लल्लाहु अलैहि m'avait वसल्लम ने offert ces हज़रत dattiers. उम्मे ऐमन से फरमाया कि Le saint उस बात prophète, को paix soit वापस soit कर lui, लो a dit à Umm Ayman: तुम्हें इतने ही और Retourne ces दूंगा dattiers, je t'en offrirai जितने तुम्हें autant दिए हुए हैं d'ailleurs. और दे दूंगा दूसरी जगह से लेकिन वो कहती थी कि अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं Mais Umm Ayman a आखिर répondu: Par Allah, certainement pas. Anas relate que le saint prophète Mohammed paix आप soit soit सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lui ने a dit à उनको Umm Ayman qu'il ऐमन lui को offrira 10 कर्ज fois कहते हैं कि मेरा plus ख्याल है en retour ou कि इससे quelque 10 गुना chose de दिए ce genre. या कुछ ऐसे ही अल्फाज थे जो कहे Et मतलब par इससे la 10 गुना suite, दे Umm दूंगा Ayman a उसके बाद ये फिर retourné ses वापस किए dattiers. गए एक रिवायत है कि हज़रत उम्मे ऐमन को मदीना की तरफ पैदल हिजरत करते वक्त Selon un récit, शदीद Umm प्यास Ayman लगी était और venue उनको à हलवा Médine à pied et elle अल्लाह avait का eu बड़ा très ख़ास ताल्लुक़ soif था lors इनका de l'émigration. उस C'était वक्त une sainte आपके femme पास et elle avait पानी un भी lien नहीं très था proche avec Allah. और Elle गर्मी ne बहुत शदीद disposait थी pas d'eau et la chaleur était उन्होंने torride. अपने सर के ऊपर किसी चीज़ की आवाज़ सुनी Elle a entendu quelque तो क्या chose देखती हैं au-dessus d'elle कि et elle ऊपर a levé la ऊपर tête pour आसमान से voir un objet गौर से वहाँ ressemblant à un देखी seau d'où tombaient मिट्टी उगाई des थी gouttes d'eau. जिससे पानी के सफ़ेद कतरात गिर रहे थे Elle a उन्होंने उसमें से pu पानी पिया en और boire यहाँ तक jusqu'à se इस्तेंजा हुआ rassasier. वो कहा करती Et थी elle raconte que par la उसकी बात suite, से मुझे elle n'a jamais कभी प्यास ressenti de la soif, और तशनगी का même au cours du कोई एहसास Ramadan. नहीं हुआ तकलीफ नहीं हुई और कभी रोज़े की हालत में भी प्यास महसूस होती तो तब भी मैं प्यासी नहीं रहती थी तो इन ख़वातीन का भी बाज़ ज़िक्र सहाबा के Et ज़िक्र में j'évoque aussi आज वक्त बताए certaines de ces ख़वातीन के dames बुलंद मुकाम en पर mentionnant les मुनतसब है compagnons de Badr इसलिए मैं afin que l'on connaisse ज़िक्र aussi साथ साथ करता रहता हूँ l'éminence de leur statut. बदरी साहबा के साथ जिन J'évoque ख़वातीन का ici भी ces ताल्लुक़ है dames qui étaient en relation हज़रत उम्मे avec ऐमन ses की ज़ुबान compagnons में de Badr. कुछ लुकनत थी Umm Ayman जब वो किसी की bégayait बात करती légèrement et selon les récits, lorsqu'elle सलामुल्लाह saluait अलैकुम के quelqu'un, बजाय elle disait पहले ये रिवाज था Salamullah सलामुल्लाह अलैकुम कहने alaykum का à la place de सलामुल्लाह अलैकुम Salamullahi alaykum. लुकनत की वजह से चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलामुल्लाह Le saint अलैकुम के prophète, बजाय paix soit sur lui, lui a permis सलामुन de अलैकुम या prononcer अस्सलामु अलैकुम Salamun कहने की alaykum इजाज़त दी ou Assalamu वही alaykum रिवाज है au lieu de Salamullahi हज़रत alaykum. आयशा Et फरमाती cette हैं tradition कि एक perdure रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि jusqu'aujourd'hui. वसल्लम ने पानी पिया Aïcha relate तो qu'Umm उस वक्त हज़रत Ayman उम्मे se ऐमन trouvait à के côté पास du saint थी prophète un jour उन्होंने कहा या quand il buvait रसूलल्लाह de l'eau. मुझे Et भी Umm पानी पिलाएं Ayman a demandé au हज़रत prophète आयशा कहती d'Allah, हैं offrez-moi de फिर l'eau. मैंने Aïcha कहा lui a demandé, उनसे est-ce कि ainsi क्या que tu रसूलुल्लाह demandes de सल्लल्लाहु l'eau अलैहि au वसल्लम saint आपसे इस prophète तरह कह रही Mohammed, है paix soit sur lui? कि तुम्हें पानी पिलाएं इस पर उन्होंने कहा हाँ कि क्या मैंने Sur ce, रसूलुल्लाह Umm सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ayman की a répondu, ज़्यादा खिदमत नहीं की n'ai-je pas इस पर नहीं है servi कि le saint रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु prophète अलैहि वसल्लम ने Mohammed, paix soit sur lui, pendant तुमसे सच कहा longtemps? है कि Sur ce, le आपने saint मुझे prophète a पानी déclaré, पिलाया tu dis vrai. Et le saint हज़रत prophète अनस lui a बयान करते offert de हैं l'eau à boire. कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Anas वफात relate पा गए que Ayman तो हज़रत उम्मे pleurait ऐमन lorsque le saint prophète, paix soit sur रो lui, के est आई décédé. उनसे पूछा गया Et lorsqu'on lui a demandé रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु la अलैहि वसल्लम raison की de क्या ses वजह हो larmes, रही है elle a तो उन्होंने répondu, कहा je कि मैं savais तो que le saint जानती थी prophète Mohammed, paix soit कि sur नबी सल्लल्लाहु अलैहि lui, वसल्लम की allait वफात हो mourir जाएगी tôt ou tard. लेकिन मैं तो इसलिए रोती हूँ Je कि वही pleure मुझसे parce खाली que nous ne नहीं हुई recevons plus आपकी de वफात का हमको révélations. लग रहा एक है जिस रात C'est-à-dire, जो ताज़ा elle बंदा était अल्लाह ताला certainement का काम triste नाज होता था suite au décès du वही saint prophète Mohammed, paix उस soit sur उसमें दफन lui, हो mais गया elle pleurait जिसकी davantage वजह en से raison मुझे du fait qu'on रसूलुल्लाह ne recevait plus de révélations toutes fraîches de la part d'Allah. हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक Anas bin मरतबा Malik रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु relate अलैहि वसल्लम की वफात qu'après के le बाद décès du saint prophète Mohammed, हज़रत paix अबू soit sur बकर ने lui, Abu Bakr हज़रत उमर से कहा a demandé à कि Omar हमारे un साथ jour हज़रत de उम्मे ऐमन के l'accompagner यहाँ चलो chez उनसे Ayman, मिलें étant जिस donné तरह que le saint रसूलुल्लाह prophète, paix soit सल्लल्लाहु sur अलैहि lui, वसल्लम rendait उनसे मिला करते थे visite à जब वो Ayman उनके पास souvent. पहुंचे तो वो रो पड़ी Abu Bakr raconte, इस पर उन दोनों ने उन्हें कहा Ayman क्या était en train हुआ de pleurer lorsque nous sommes जो arrivés कुछ chez अल्लाह के elle. पास है वो Nous उसके lui avons रसूल के demandé लिए la है raison de ses larmes, étant हज़रत उम्मे donné ऐमन ने que कहा कि ce मैं इसलिए नहीं qu'Allah a रोती auprès de कि lui est जानती नहीं meilleur हूँ pour le saint जो अल्लाह के prophète. पास है वो उसके रसूल के लिए Ayman a répondu, je sais que ce qui se बड़ा trouve auprès d'Allah नरम est तरीका meilleur pour son सलूक हुई envoyé. जैसा कि मैंने कहा Elle ne l'ignorait pas, étant कहती हैं कि donné मैं तो qu'elle était इसलिए d'une grande रोती piété, हूँ comme je l'avais dit. कि अब Elle a आसमान ajouté, से je pleure वही parce que la आने वाली है révélation a cessé de उन्होंने descendre इन du दोनों को भी ciel. पिला दिया और वो Et दोनों ces फिर ठीक paroles हो ont गए fait pleurer Abu Bakr et Omar. हज़रत उसामा
Il y avait une grande différence de teint entre Oussama et Zayd, son père, étant donné que la mère était d'origine abyssinienne et africaine. Le teint d'Oussama s'approchait plus de celui de sa mère, et certains émettaient à cet égard des doutes sur la paternité d'Oussama en disant qu'il ne s'agissait pas du fils de Zayd. Certains émettaient ces objections rien que pour le plaisir et les hypocrites en faisaient de même. Aïcha relate: un jour, le saint prophète, paix soit sur lui, est venu chez moi tout content. Et le saint prophète, paix soit sur lui, m'a dit: ô Aïcha, Mujaziz Mudlaji est venu me voir à l'instant. Il a vu Oussama bin Zayd et Zayd bin Harith enveloppés sous un seul manteau, en raison de la chaleur ou en raison de la pluie ou pour d'autres raisons. Tous deux, père et fils, s'étaient recouverts le visage et la tête, et leurs pieds étaient à découvert. Mujaziz a dit que leurs pieds se ressemblaient beaucoup. Les pieds du père et du fils se ressemblaient beaucoup. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, était très content que Mujaziz avait répondu à l'objection à propos d'Oussama. Il s'agissait là de la déduction d'un expert de ce monde, et cette déduction avait la valeur d'un verdict décisif dans la société arabe. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, était très content d'avoir trouvé une preuve énoncée pour réduire au silence les gens de ce monde et les hypocrites. Zayd était l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il était aussi son fils adoptif. Et le prophète d'Allah l'avait marié à Zaynab bint Jahash. Mais ce mariage n'a pas duré longtemps et Zayd a donné le divorce à Zaynab. Le mariage n'a tenu qu'un an ou un peu plus d'un an. Par la suite, le saint prophète s'est marié à Zaynab. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a réuni plusieurs références à cet égard dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Il déclare à ce propos que la même année, en l'an 5 de l'Hégire, peu avant la razwa des Banu Mustalik, qui a eu lieu au cours du mois de Charban de la même année, eh bien, le saint prophète a épousé Zaynab bint Jahash. Zaynab était la fille d'Umayya bint Abdel Muttalib, la tante du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Zaynab était certes très vertueuse et pieuse, mais elle était quelque peu consciente de la grandeur de sa famille. Le saint prophète, paix soit sur lui, par contre, était à l'abri de telles pensées. Et bien qu'il avait tenu en compte les circonstances familiales d'un point de vue social, le saint prophète, paix soit sur lui, considérait le mérite inné et la vertu et la pureté individuelle comme étant les véritables critères de la noblesse. Tout comme le Saint-Coran déclare: « Inna akramakum indallahi atqakum » c'est-à-dire que le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a proposé le mariage de Zaynab bint Jahash à son esclave affranchi et son fils adoptif Zayd bin Haritha. Au début, Zaynab n'a pas accepté ce mariage vu la noblesse de sa famille, mais en fin de compte, en voyant le désir du saint prophète, paix soit sur lui, elle a accepté cette proposition. Ainsi, en raison de la proposition et du souhait du saint prophète, paix soit sur lui, il y a eu ce mariage entre Zaynab et Zayd. Zaynab a accepté les vœux du saint prophète, paix soit sur lui, mais dans son cœur, Zayd sentait que Zaynab avait encore des sentiments cachés du fait qu'elle appartenait à une famille noble et qu'elle était une proche parente du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, tandis que Zayd était un esclave affranchi et n'était pas son égal. De même, Zayd sentait que sa position était inférieure à celle de Zaynab, et ce sentiment s'est renforcé lentement et progressivement,
Et en fin de compte, leur vie conjugale était devenue désagréable et la relation n'allait plus entre le mari et la femme. Lorsque cette situation s'est dégénérée, Zayd s'est présenté de son propre chef au saint prophète, paix soit sur lui, et s'est plaint du traitement de Zaynab et a demandé la permission de divorcer. Selon un autre récit, Zayd aurait déclaré que Zaynab utilise un langage dur à son égard et qu'il souhaitait la divorcer. Tout naturellement, le saint prophète, paix soit sur lui, était fort triste en entendant cela et il lui a interdit de la divorcer. Et pour apaiser la situation, le saint prophète, paix soit sur lui, a exhorté Zayd en disant ceci: crains Allah et réglez vos différends. Il lui a donné ce conseil en se disant que Zayd devait faire davantage pour apaiser la situation. Et ces paroles du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont été consignées dans le Saint-Coran en ces termes: Amsik alayka zawjaka wattaqillah, c'est-à-dire, ô Zayd, ne divorce pas de ta femme et crains Allah. La raison de cet avis du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est qu'en principe, le saint prophète n'aimait pas le divorce. Ainsi, à une occasion, le saint prophète avait déclaré que de toutes les choses légales, le divorce est le plus indésirable aux yeux d'Allah. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le divorce n'est autorisé qu'en dernier recours en islam. Deuxièmement, comme le rapporte l'imam Zaynul Abidin, le fils de l'imam Hussein, et d'ailleurs l'imam Zuhri a déclaré que ce récit est authentique. Selon ce récit, étant donné que le saint prophète Mohammed lui savait par la révélation divine que Zayd divorcerait de Zaynab et que Zayd allait se marier avec le saint prophète, paix soit lui, ainsi le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en raison du fait qu'il allait avoir un lien personnel avec Zaynab, il voulait être indépendant et neutre. De plus, le saint prophète ne souhaitait pas qu'il participe à la dissolution du mariage de Zayd et de Zaynab, et il souhaitait qu'ils continuent à vivre ensemble le plus longtemps possible. Et sous cet angle, le saint prophète, paix soit sur lui, exhorta vivement Zayd de ne pas divorcer de sa femme et de craindre Dieu et de régler ses différends entre eux par tous les moyens possibles. De plus, le saint prophète craignait également que si Zaynab devait l'épouser après s'être séparée de Zayd, eh bien, les gens soulèveraient l'objection que le saint prophète avait épousé la femme divorcée de son fils adoptif, et cela allait faire beaucoup de bruit. Allah déclare à cet effet dans le Saint-Coran: Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. C'est-à-dire, au prophète, tu as dissimulé dans ton esprit ce qu'Allah allait mettre à jour et tu as craint les hommes, alors qu'Allah avait plus le droit que tu le craignes. En tout cas, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a conseillé à Zayd de craindre Dieu et l'a empêché de donner le divorce. Ainsi, Zayd s'est soumis à ce conseil et il est retourné chez lui silencieusement. Cependant, il était difficile de se réconcilier. Les différends avaient pris trop d'ampleur. Et ainsi, après quelque temps, Zayd a divorcé de sa femme. Lorsque la période d'attente de Zaynab s'est écoulée, le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu une nouvelle révélation concernant son mariage avec elle. Selon ce commandement divin, la sagesse était que Zaynab soit consolée et grâce à ce mariage, on allait démontrer qu'il n'y avait aucune honte à ce que les hommes musulmans épousent une femme divorcée. De plus,
Étant donné que Zayd était le fils adoptif du saint prophète et qu'il était connu comme son fils, en épousant la femme divorcée de Zayd, le saint prophète, paix soit sur lui, pouvait démontrer par un exemple pratique aux musulmans qu'un fils adoptif n'était pas un vrai fils et que les injonctions qui appliquent aux fils biologiques ne s'appliquent pas aux fils adoptifs. Et ainsi, on pourrait mettre fin à cette coutume arabe de l'époque de l'ignorance. À cet égard, le Saint-Coran, le plus authentique des documents historiques, déclare ceci: Falama qada Zaydun minha wataran zawajnakaha likay la yakuna ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula. Ensuite, lorsque Zayd a interrompu toute relation avec elle, nous l'avons unie en mariage avec toi, c'est-à-dire avec le saint prophète, paix soit sur lui, afin que pour les croyants, il n'y ait aucun empêchement en ce qui concerne les femmes de leurs fils adoptifs, lorsque ceux-ci ont cessé toute relation avec elles. Et le décret d'Allah doit être exécuté. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, a décidé d'épouser Zaynab après cette révélation divine. Et il n'y avait aucun désir, aucune pensée personnelle de sa part. Le saint prophète a envoyé sa proposition à Zaynab par l'intermédiaire de Zayd lui-même. Et avec le consentement de Zaynab, son frère Abu Ahmad bin Jahash lui a servi de tuteur et il l'a marié au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et la dot a été fixée à 400 dirhams. C'est ainsi que l'ancienne tradition, qui était fermement ancrée en Arabie, a été déracinée à sa source et à sa base. Et cette ancienne tradition a été rejetée par l'islam grâce à l'exemple du saint prophète, paix soit sur lui. Certains historiens, certains muhaddithines croient que, étant donné que ce mariage entre Zaynab et le saint prophète, paix soit sur lui, a été fait suite à un commandement de Dieu, il n'y a pas eu de cérémonie de nikah pour ce mariage. Cependant, cette conclusion est erronée. Sans doute, ce mariage s'est déroulé sous le commandement de Dieu. Et on peut dire que ce mariage a été fait aux cieux. Cependant, cela n'exempte personne de l'application pratique de la charia. La charia qui a été instituée par Dieu lui-même. Ainsi, la référence d'Ibn Hisham, citée plus bas, déclare que la cérémonie du nikah a eu lieu pour ce mariage entre le saint prophète et Zaynab. Et il n'y a pas de doute à ce propos. On trouve certes le hadith disant que Zaynab disait fièrement aux autres épouses du saint prophète que leurs mariages ont été annoncés par l'intermédiaire de leur tuteur ici sur terre et que son mariage a été annoncé au ciel. Mais il est faux d'en conclure qu'il n'y a pas eu de cérémonie physique de mariage. En dépit du fait qu'il y avait la cérémonie physique du mariage entre Zaynab et le saint prophète, paix soit sur lui, elle avait la distinction que son mariage avait été décidé au ciel, tandis que les mariages des autres épouses du saint prophète, paix soit sur lui, avec le saint prophète, paix soit sur lui, ont été faits par les moyens ordinaires. Selon d'autres récits, il est dit que le saint prophète s'était rendu chez Zaynab sans sa permission et on déduit de cela qu'il n'y a pas eu de cérémonie de nikah. Mais si l'on y réfléchit, eh bien, l'on comprend qu'il n'y a aucun rapport entre la tenue d'une cérémonie de mariage ou pas. Il serait incorrect d'annoncer que le saint prophète s'était rendu chez Zaynab sans sa permission. Cela est contraire aux faits, parce qu'il y a un récit spécifique de Bukhari qui déclare qu'après leur mariage, eh bien, Zaynab a souhaité adieu à sa famille et elle est venue chez le saint prophète, paix soit sur lui, et pas vice-versa. Le saint prophète ne s'était pas rendu chez elle. L'on peut aussi déduire de ce récit que lorsque Zaynab est venue chez le saint prophète, paix soit sur lui, le saint prophète s'est rendu chez elle sans lui demander sa permission. Cela n'est pas contraire aux règles, étant donné que Zaynab était son épouse. Étant donné qu'elle était son épouse, il n'avait pas besoin de permission pour se rendre chez elle. Par conséquent, le récit concernant le saint prophète ne demandant pas la permission n'a aucun rapport avec la question de savoir s'il y a eu une cérémonie officielle de nikah ou non.
D'ailleurs, Ibn Hisham déclare que malgré l'ordre divin, il y a eu une cérémonie officielle de Nikah et la rationalité veut qu'il en soit ainsi. Car premièrement, il n'y avait aucune raison de faire une exception à la règle générale. Deuxièmement, l'objectif de ce mariage était de briser une coutume et d'éliminer son influence. Et il était d'autant plus nécessaire que ce mariage soit célébré avec une grande proclamation et que tout le monde en ait connaissance. C'est pour cette raison que ce mariage officiel a eu lieu, afin que le monde sache qu'on met fin à cette tradition aujourd'hui. J'ai donc évoqué le mariage de Zaynab avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en évoquant certains faits à propos de Zayd. J'en ai fait mention tout simplement parce qu'aujourd'hui encore, des détracteurs posent des questions à ce propos et soulèvent des objections à ce sujet. D'où l'importance de connaître quelques détails à ce propos. Ainsi donc, il est important de connaître des faits à propos de ce mariage. Il y a d'autres explications à présenter à ce propos et à propos de Zayd aussi, que je dois mentionner par la suite. En tout cas, j'ai évoqué ces deux points dans la mesure du possible et je mentionnerai d'autres points à propos de Zayd à l'avenir. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر